नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन स्वागत करुछि अन्वेषण आईएएस रो ए प्लेटफॉर्म रे। आज हमें डिस्कस करुछे ओएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज रो प्रथम टेस्ट रो पार्ट 2 आपण माने देखिथिबे। पार्ट 1 ऑलरेडी हमें डिस्कस करिथिलु जोटा कि 1 to 50 क्वेश्चंस थिला। वर्तमान ए वीडियो माध्यम रे हमें 51 रो 100 क्वेश्चन को डिस्कस करिवु एवं तार सिलेबस आपन को सामने रे अछि। चलंतु डिस्कस करिवा क्वेश्चन। देखो तो प्रथम क्वेश्चन जो आपन को स्क्रीन रे अछि दा होची सूफीज्म मूवमेंट ऊपर। तमे प्रश्न थिला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूफीज्म मूवमेंट ऑफ मिडाइवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रथम स्टेटमेंट थिला सूफीज्म वाज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम। स्टेटमेंट ठीक अछि पर जो स्टेटमेंट सेकंड रे अछि द फेमस सूफी सेंट निजामुद्दीन आलिया बिलोंग टू द सुरावर्दी ऑर्डर। ये जो स्टेटमेंट ही अच्छी आपण जे देखि परिबे तबे ये जो फेमस ऑफ द सूफी सेंट्स ऑफ इंडिया वाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती who settled in Ajmer which became the center of his activities। तने जो सूफी सेंट जे थिले बहाउद्दीन जकारिया who came under the influence of another famous mystic that is सिहाबुद्दीन सुरवादी। ओके तेणु ये जो क्वेश्चन जी पचरा जाई अछि आपण देखि परथबे निजामुद्दीन वालिया बिलोंग टू द सरवदी ऑर्डर। तेणु एठी आपण सिंपली देखि परथबे ये जो सिहाबुद्दीन सरवादी थिले से कैटेगरी रो या जो सरवदी ऑर्डर जे थिले तेणु तार फाउंडर किए थिले सिहाबुद्दीन सरवदी। ठीक अछि तेणु सी आपनकर जो प्रश्नटी अछि ये स्टेटमेंट अछि निजामुद्दीन वालिया सी नहंती। तेणु सेति पई सेकंड स्टेटमेंट आपनकर इनकरेक्ट अछि। ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहूची इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडाइवल इंडिया टर्म्स नायक्स और पॉलीगॉट्स रेफर्स टू व्हाट। तो एठी जति आपण देखिबे जो नायक्स एंड पॉलीगॉट्स जो मन अछंती खास करके एटा विजयनगर आर्मी रे एम्भली देखा जाउथला। तेबे समान को टॉप ग्रेडेड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी बोली कहा जाउथला। टॉप ग्रेडेड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी बोली कहा जाउथला। तेणु एटा होची डी होची आपनकर करेक्ट आंसर। ठीक अछि चलंतु नेक्स्ट देखिबा। Which of the following statements are correct? पुनी थरे Sufism stress the elements of love and devotion as effective means of the realization of God. In Sufism, self-discipline was considered an essential condition to gain knowledge of God by sense of perception. Sufism inculcated a spirit of tolerance among its followers. यदि आपण तीनोटी जाक स्टेटमेंट्स को देखिबे तबे सुफिज्म जो आपनकर मु आगुरु भी आपन को कहितले जो पूर्व वीडियो रे आपण देखिथिबे तबे जो हमर भक्ति मूवमेंट थिला हिंदू रिलीजन रे से भली भाबरे आपन को सुफिज्म भी आस्थिला राइट। तेणु से सुफिज्म भी आपण देखि परिबे सुफिज्म भी इस्लामिक रिलीजन रे रिफॉर्म आनिबा पई चेष्टा करथिला। तेणु तीनोटी जाक स्टेटमेंट आपण देखि परिबे ठीक स्टेटमेंट जेमति सुफिज्म stressed the elements of love and devotion as effective means of realization of God। तेणु आपण डिवोशन माध्यम रे आपण गॉड कर रियलाइजेशन ही परिबो नंबर 1। नंबर 2 आपण कहि परिबे जेमति सुफिज्म जो अछि सेल्फ डिसिप्लिन वाज कंसीडर्ड एज एन एसेंशियल कंडीशन सेल्फ डिसिप्लिन एवं ता छडा सुफिज्म इनकलकेटेड ए स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस सहिष्णुता भी ई कोन करथला प्रमोट करथला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। With reference to the religious belief and ideas during the Mughal period, which of the following statements is are correct? यदि ई स्टेटमेंट रे आपण देखिबे द सेंट दादू preached a non-sectarian Nipak path। Second होची the Saint Tukaram was also a preacher of liberal ideas, was devotee of Lord Bhitoba। तेणु ये दुई जण जाक होचंदी आपनकर कोन ना रिलीजियस लीडर माने थिले। तेणु मुगल समय रे तबे दुईटी जाक स्टेटमेंट आपण करेक्ट बोली देखि परिबे। यदि सेंट दादू आपण देखिबे गुजरात रे
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ରାଜସ୍ଥାନ ମୋଷ୍ଟଲି ରାଜସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଗୋଟେ ନନ୍ ସେକ୍ଟେରିଆନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିପାକଜି ପାଥ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଥ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ନଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କହିପାରିବେ ଯେ ସେ ନା ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ମୁସଲିମ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଯେ ତୁକାରାମ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜିର ଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ या ଭକ୍ତି ଯୋଉ ସମୟ ଥିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାନ୍ଧାରପୁର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ନିଜର ଆଇଡିଆ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପପୁଲାର ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣର ତେବେ ଆପଣ जो क्यूआर अच्छी क्यूआर को स्कैन करके आप जॉइन करें आमर 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ्स और 12 मंथ्स रो डिफरेंट प्रोग्राम्स अच्छी तेणु आप चाहिए ये जॉइन करें ठीक अच्छे चलते आगे जावा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट तेरे भक्ति मूवमेंट रो कौन सब स्टेटमेंट अच्छी निम्बार्का and Ballabacharya were preachers of Vaishnavite Bhakti in Telangana region. Second, Surdas was a disciple of Ramananda, and Surdas was a worshipper of Rama in North India. Mirabai was a great devotee of Krishna, and she became popular in Rajasthan for her bhajans. ତେଣୁ इस चारोटी स्टेटमेंट को जदि आपण देखिबे एटी प्रथम स्टेटमेंट देखंतु निम्बार्का and Vallabhacharya were also other preachers of Vaishnavite Bhakti in the Telangana region. ତେଣୁ statement ठीक अछि 2 ଏବଂ 3 statement जदि आपण देखिबे Surdas was the disciple of Vallabhacharya and popularized Krishna cult in North India. ତେଣୁ ये दुईटी statement जो अछि आपण एटी देखि परिबे Surdas was disciple of Ramananda statement अछि but actually से कहार थिले Vallabhacharya थिले ଏବଂ से popularize करथिले कृष्ण कल्ट भगवान कृष्णଙ୍କର କଲ୍ଟ ପପୁଲାରାଇଜ କରିଥିଲେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୀରାବାଇ ୱାଜ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭୋଟି ଅଫ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ସି ବିକେମ୍ ପପୁଲାର ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଫର ହର ଭଜନ୍ସ ମୀରାବାଇ ଯେ ଭକ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ କରେକ୍ଟ 56 which of the following were the disciples of Ramananda in Bhakti cult? Which of the following were disciples of Ramananda in Bhakti cult? यदि आपण देखिबे चारोटी ऑप्शन अछि कबीर पीपा रायदास रामानुजा तेणु एठी आपण देखि परिबे भक्ति कल्ट रो जो माने डिसाइपल थिले रामानंदंगर तेबे समान होचंदी कि ना कबीर पीपा रायदास जो आपनकर ऑप्शन अछि तेबे तीन जण जाको होचंदी कोन ना तांकर डिसाइपल आपण कहि परिबे जे लास्ट रे जो नाटी अछि रामानुजा से तांकर डिसाइपल नथिले तेणु एठी आपण सिंपली देखि परिबे डिसाइपल्स वर कबीर देन रायदास देन सेना साधना धाना नरहरि राइट पीपा आपण एठी आउट जिंस भी देखि परथबे अक्रॉस द क्लास देखो कबीर मुस्लिम वीवर रायदास कॉबलर सेना बार्बर साधना बुचर तेणु अक्रॉस द क्लास एंड कास्ट इन द सोसाइटी तांकर सेक्टरे या तांकर शिष्य भाव रे से माने थिले तेणु ये गोटे बड़ बड़ कंट्रीब्यूशन थिला से समय जो भक्ति मूवमेंट आसीथिला किबा जो सूफी मूवमेंट आसीथिला या से समय रे जो कास्ट सिस्टम थिला ताको कोठी ना कोठी ब्रेक करबा पई चेष्टा करा जायथिला ठीक अछि चलो ताको जिबा which of the following statement best describes the term ताकबी with respect to history of India आपण देखि परथिबे जो ताकबी मेंशन करा जायछि तारो कोन महत्व अछि या टर्म रो माने कोन एक्चुअली इट वाज अ स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स ऑफ कल्टीवेशन ओके तेणु फार्मर्स कृषक माननकु लोन दबा पई एटाकू डेवलप करा जायथिला चलंता को जिबा which of the following statements are true with respect to the कबीर संत कबीर को विषय रे
को स्टेटमेंट्स गुडी को करेक्ट प्रथम स्टेटमेंट को आपण देखि परिबे कोविड्स ऑब्जेक्ट वाज टू रिकनसाइल हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन टू सेक्ट्स तेनु आपण सिंपली कहि परिबे एटा ओटे ठीक स्टेटमेंट कारण कोनोसी भेदभाव से रखि नथिले हिंदू एवं मुस्लिम को मध्य भाईचारा को एस्टैब्लिश करबा पई मध्य से चेष्टा करथिले ता छडा he regarded devotion to God as an effective means of salvation तेणु इफेक्टिव मीन्स ऑफ साल्वेशन रो को माध्यम रे हे परिबे डिवोशन भक्तिपूत अर्पण करिके हे परिबो देखंतु म आपन को आगुरु भी कहिछि जो माने पार्ट 1 को देखिथिबे मु सेठी मेंशन करिथिली कि ब्राह्मणिज्म रो डोमिनेंसी जो से समय रे थिला ता खिलाफ रे ये मूवमेंट गुडी को स्टार्ट हेतिला तेणु ब्राह्मणिज्म रो डोमिनेंसी थिला संस्कृत लैंग्वेज रो डोमिनेंसी थिला संस्कृत लैंग्वेज को केवल ब्राह्मणिज्म माने ही एक्सेप्ट करो परथिले तेणु ये सबु खिलाफ रे ई जिंस स्टार्ट हेतिला with reference to Chaitanya in medieval history which of the following statements are correct देखि परिबे he was a well known saint reformer of Maharashtra who popularized the Krishna cult number 1 he renounced the world became an ascetic and wandered all over the country preaching his ideas. He proclaimed the universal brotherhood of man and condemned all distinction based on religion and caste. He emphasized love and peace, showed great sympathy to the sufferings of other people. देखो ये जो चैतन्य विषय लिखा है चैतन्य आपण जानिथिबे ओडिसा को मध्य आसीचंती बंगाल रे तांकर जन्म ओडिसा को आसीचंती भक्ति मूवमेंट जो चैतन्य जो ओडिसा रे हेतिला ताकू भक्ति मूवमेंट को एस्टाब्लिश करिबा तार प्रचार करिबा प्रसार करिबा ए सब जिंस रे चैतन्यकर गोटे बड़ कंट्रीब्यूशन रहिछि he emphasized love peace and showed great sympathy to the sufferings to other people okay तेणु प्रथम स्टेटमेंट को जदि आपण छाडी देबे बाकी तीनोटी जाक स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट तेणु ये सिंपली आपण देखि परिबे यूनिवर्सल ब्रदरहुड विषय से कहूतले ता छडा एम्फसाइज लव एंड पीस एंड शोड ग्रेट सिंपैथी ता छडा लव एंड डिवोशन को से बहुत ध्यान देइथिले ता छडा आपण देखि परिबे कास्ट एंड इट्स टीचिंग्स आर वाइडली फॉलोड इन बंगाल इवन टुडे ओके तो ओडिसा रे मध्य चैतन्य को पूजा करा जाय ठीक अछि चलो नेक्स्ट जीवा इन कनेक्शन विथ भक्ति मूवमेंट इन मेडाइवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखो तो पुणी थे जो निम्बार्क एंड वल्लभाचार्य आसिले माने प्रीचर कहार ना वैष्णवाइट भक्ति इन केरला माधव इन कन्नड़ा region propagated the concept of nirguna bhakti and Ramanuja advocated the concept of प्रॉबति मार्ग यदि आपण एठी एक्सप्लेनेशन को देखिबे 1 एंड 2 एठी होची एठी प्रश्न पचरा जाउची कि ये मध्यरु कोटा इनकरेक्ट ओके इनकरेक्ट पचरा जाउची तनो एटा को ध्यान देबे 1 एंड 2 होची इनकरेक्ट 3 होची करेक्ट ओके 1 एंड 2 होची इनकरेक्ट काहेकि आपण एठी देखि परिबे निम्बार्क एंड वल्लभाचार्य वर प्रीचर वैष्णवाइट भक्ति and second statement होची कोन na 13th century Madhava from Kannada region propagated Dvaita and dualism of Jivatma and Paramatma okay so this is what exactly the आपण कहि परिबे सेकंड स्टेटमेंट सिद्ध पे इनकरेक्ट अछि एवं आंसर होची इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट पचरची तेनु 1 and 2 होची आंसर नेक्स्ट को चलंतु which of the following scholars was where अष्टदिग्गज इन द कृष्णदेवराय कोर्ट ओके अष्टदिग्गज जो माने थिले कृष्णदेवराय कोर्ट रे से मानको को मानको कुआ जाउथो ठीक अछि आपण देखि परिबे जो तीन जण अछि जेंति पिंगाली सुराना आलसानी पेदना एंड तेनाली रामकृष्ण ये जो तीन जण माने अछंती से मानको ही सी स्कॉलर्स मानको ही ये जो पर्टिकुलरली स्टेटस दिया जाइथिला जाको हमें अष्टदिग्गज बोली कहतो ठीक अछि चलो तो नेक्स्ट देखिबा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडाइवल इंडिया द टर्म बानिक रेफर्स टू बानिक बोली हमें कहा को कहतिले
बानिक आमे ट्रेडर्स मानक कहते ठीक अच्छे मन रखिए टर्मिनोलॉजी बेले बेले क्वेश्चन पचरा जाए तेणु बानिक को आमे बिजनेस को ही आगुरी कहते या ट्रेडर्स को कहते नेक्स्ट देखिबा इन द लेटर Vedic period Satmana and Krishnala were associated with which one of the following सतमाना एंड कृष्णाला ये जो दुईटी जाक ना अच्छी से कहा सहित जड़ित तेज से हूँ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन सहित जड़ित से कहा सहित जड़ित गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन सहित से गुड़िक जड़ित अच्छी ठीक अच्छे चलते नेक्स्ट जीवा प्रज्ञा परमिता सूत्र राइट एंड विमला कीर्ति निर्देशा सूत्र and Sukhavati Sutra were associated with which one of the following? Then is Buddhism ro जो महायाना and हिनायन जो अच्छी called तबे महायाना रो जो text गुड़िक अच्छी सी होची ये text गुड़िक जेमती प्रज्ञा परमिता सूत्र विमला कीर्ति निर्देश सूत्र एवं सुखवती सूत्र ये होची कौन ना महायाना text ओके चलते नेक्स्ट देखिबा In the context of temple architecture of Odisha, Indian history, consider the following statements. Prathama statement kon the Chalukyas developed the Besara style in the building of structural temples. Second, the cave temple architecture was famous for the Chalukyas. The cave temples of Chalukyas are found in Ajanta, Ellora and Nasik. ତେଣୁ ଏଠି ଅପସନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନୋଟି ଯାକ ଅପସନ୍ସ କରେକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣର ତେଣୁ ଚାଲୁକ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଅଫ ଆର୍ଟ ତେଣୁ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ବେସର ଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଜନ ହୌସଲାସଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଡେଭଲପ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର କେଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ନାସିକ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 66 the hot stirrup was introduced in the Indian subcontinent by Kushana को introduce करथिले जो simply आपण कहि परिबे in the field of technology Indians seem to have benefited from the contact with the Central Asia तेबे ए जो Central Asia रो contact रे कोन हमको benefit हेतिला ना introduction of the stirrup ए जो हेतिला it was attributed to the Kushanas कोणार्क सन टेम्पल विषय कौन करेक्ट स्टेटमेंट्स हमको देखिबा इट इज लोकेटेड इन गुजरात बहुत सिंपल क्वेश्चन तेणु कोणार्क सन टेम्पल ऑब्वियसली गुजरात रे नुहे ओडिसा रे अछि इट वाज बिल्ट बाय किंग नरसिंह देव वन द टेम्पल्स गॉट द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिल्कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को स्टेटस दिया जाइछि तेणु एटा को मन रखिबे एवं एरा बिल्ड केबे करा जायतिला बिल्ड हेतिला 1250 सी बाय किंग नरसिंह देव ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ओके तेबे 1984 रे एटो कामे कोन देछि ना यूनेस्को हेरिटेज साइट या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाब रे स्टेटस दिया जाइछि नेक्स्ट देखिबा with reference to the Dravidian style of temple architecture consider the following like the Dravidian style of temple the Nagara temple is enclosed within a compound wall तो देखो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल रे आपण कंपाउंड वॉल पाइबे नाही कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रे आपण कंपाउंड वॉल पाइबे आपण मेघनाथ पाचरी पूरी जगन्नाथ मंदिर देखिबे आपण अनंत वासुदेव मंदिर को देखंतु सेठी भी बाउंड्री वॉल अछि आपण लिंगराज मंदिर को देखंतु बाउंड्री वॉल अछि तो बाउंड्री वॉल वन ऑफ द फीचर जोटा कि आपनकर नागारा स्टाइल रे भी देखिबा को मिलिबो नाही द्राविडियन रे मिली परिबो बट कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर रे भी हमें जो बाउंड्री वॉल को देखि था गोपुरम इज द एंट्रेंस गेटवे फाउंड इन द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट एथरे कौन से संदेह नहीं गोपुरम वाटर रिजर्वर और इस टेम्पल टैंक enclosed with the temple complex is a common feature of Dravidian style of architecture तो ये भी गोटे प्रकार ठीक स्टेटमेंट द्राविडियन साउथ इंडियन जो मंदिर गुडी को देखा जाए सेठी हमको वाटर टैंक देखिबा को मिले ठीक अछि नेक्स्ट जीवा थिएटर फॉर्म्स एंड स्टेट तबे जो नौटंकी आपण देखिबे नौटंकी
हिमाचल प्रदेश रे देइछि नौटंकी आपनको उत्तर प्रदेश रे देखिबाकू मिले यूपी रे देखिबाकू मिले भबाई गुजरात अछि एटा ठीक अछि देन मार्च जो आसिला सेटा आसाम देइछि मार्च आसाम नुहे तमाशा होची महाराष्ट्र एटा होची ठीक मैच जदि आपण मार्च देखिबे मार्च बेसिकली आपनको देखा जिवो मु जेमती कहूतिली मध्य प्रदेश रे मार्च आपनको देखिबाकू मिलियो मध्य प्रदेश रे आपनको मार्च देखिबाकू मिलियो ओके एंड तमाशा होची कहार महाराष्ट्र रे नेक्स्ट देखिबा हमें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुप्ता's literature consider the following statements. The Puranas in their present form were composed during Gupta period. Puranas in the present form were composed during the Gupta period. Second statement होची the Mahabharata and Ramayana were given final touches and written in the present form during the Gupta period. Okay. तेणु तृतीय कौन ना पंचतंत्र stories were composed by uh, Amar Simha during the Gupta period. ଯଦି ଏଠି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ହଉଛି 1 and 2 only are correct but ତୃତୀୟ ଅପସନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ statement ଦେଖିବେ the Panchatantra stories were composed by Vishnu Sharma during the Gupta period. The Buddhist author uh, Amarasimha compiled a lexicon called Amarkosha. Okay, ତେଣୁ ଏଠି ଆମର statement 1 and 2 correct ଅଛି 3 correct ନାହିଁ. Next देखिबा हमें 71. Which one of the following kingdom is associated with the life of Buddha? Okay. Vaishali, Kapilavastu, Pipalavina and Avanti. ଯଦି ଆପଣ ଅପସନ ଦେଖିବେ ଚାରୋଟି ଯାକ associated with the life of Buddha. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖେ ମୁଁ ପାର୍ଟ 1 ର ଡିସ୍କସନ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେବଳ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ନୁହେଁ ନୂଆ ତ ହବ ହିଁ ହବ obviously ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆମେ କଭର କରିବୁ ପ୍ରିଭିୟସ ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିପାରିବେ ତେଣୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରିଭିଜନ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇପାରେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା which of the following are features of the Gandhara school of art ଗାନ୍ଧାରା ସ୍କୁଲ ଅଫ ଆର୍ଟ ର ଫିଚର କଣ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତେବେ ଚାରୋଟି ଯାକ ଯୋଉ ଅଛି ଚାରୋଟି ଯାକ ଫିଚର କଣ ନା anatomical accuracy drape and style of garments to toga a garment of ancient Rome urna in the middle of the eyebrows plain halo ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଗାନ୍ଧାରା ସ୍କୁଲ ଆର୍ଟ ର ଅବଜରଭେସନ ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଯାକ statement ହଉଛି correct. With reference to Indian history, consider the following text. Text ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୀତି ପ୍ରକାରଣ ଓକେ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ବଣ and ଅବଦାନ ସତ୍ତ and ତ୍ରିଶକ୍ତି ତ୍ରିଶକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ମହାପୁରାଣ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ टेक्स्ट गुड़िक लेखा जाइए लिटरेचर गुड़िक लेखा जाइए ता मध्यरु ठीक कोटा ठीक टा होची 2 and 4 ठीक होची 2 and 4 एटा कि परिस्थिति परमण एंड दिस त्रिशक्ति लक्षण ओके 2 and 4 होची आंसर जो नीतिपाकरण इज a Buddhist scripture contains method were taught by Buddha's disciple Kakana as approved by the Buddha and it was recited at the first Buddhist council. And the other one is Abba Dansaka, 100 glorious deeds are Jataka stories, this Buddhist tales. The stories are thematically organized into 10 books that portray the truth of the doctrine karma and the power of uh, givings, faith and devotion. Okay. Next, consider the following hypothetical temple. Hypothetical temple. First statement: it is a circular temple in the ground plan without a roof. Circular temple in the ground plan without roof. Roof. Sorry. 64 yoginis
placed in that wall of inner side belongs to this type of temple. ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି hyper hypaethral temple. Which of the following statements ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଯାକ statement correct. କାହିଁକି ନା hypaethral temple is a circular temple in the ground plan without the proof belonging to the 64 yoginis placed in the wall of inside. 29 of extant yogini temples. 4 are located in the Gwalior Bundelkhand region at Veraghat near Jabalpur and Mitauli near Gwalior and Dudhai near Lalitpur. So these are areas where they are affected. Okay. Next, देखिए with respect to the Hindustani music and Carnatic music, consider the following statements. Hindustani music is Kirti based, while Carnatic music is Raga. Okay. Next, Alapanas are elaborated from note to note in Hindustani music. Third, the sarangi is a major accompaniment in Hindustani, while the violin reigns in Karnataka. So, what we'll see from this difference between Carnatic and Hindustani music, these 2 and 3 statements are correct, and first statement is not correct. Consider the following pairs. Site of Ashoka's major rock edict and location in the state. Dhauli, of course, Odisha. Iragudi, Andhra Pradesh. Jowgada, Madhya Pradesh. Kalsi, Karnataka. Okay. So, in between this, 2 pairs are correct. Okay. So, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା next. Next question କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ screen ରେ? Common to both Hinduism and Jainism. Common to both ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ Hinduism and Jainism, obviously non-injury to animal life or non-violence. ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତ ତୃତୀୟଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି indifference to the authority of the Vedas. ତୃତୀୟଟି ଯୋଉ ଅଛି indifference to the authority of Vedas and denial of efficiency of neutrals. Okay. ତେଣୁ simply efficiency of rituals ଅଛି. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ options ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, statements ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି non injury to animal, ୟା ଭିତରେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର common Buddhism and Jainism ଭିତରେ. ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ Buddhism advocated the middle path, that is avoidance of extreme penance or employment. On the other hand, Jainism advocated extreme penance and asceticism. Okay, and here is a basic fundamental difference between the what you call Jainism and Buddhism. Okay. Which one of the following statements about Sangam literature in ancient South India is correct? The social classification of Varna, also known as Sangam poets. Okay. Next, match list 1, list 2. List 1. ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ Visakha Dutt, second Barahamihira, third Charaka, and fourth is the Brahmagupta. Okay. ତେଣୁ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ Visakha Dutt drama, Barahamihira astronomy, and Charaka is medicine, and Brahmagupta, that is drama. Which one of the following scripts of ancient India was written from right to left? खरस्वती जो language अच्छी से खरस्वती language को right ରୁ left को लिखा जाउଥିଲା. Okay.
With reference to the Nagara style of temple architecture, consider the following statements. The प्रथम statement जो होची, Famsana buildings tend to be higher than the Latina or Rekha Prasad uh, type of ଆପଣ କହିପାରିବେ structure. ତେବେ Famsana buildings tend to be higher than the Latina or Rekha Prasad type of architecture. ଏଠି statement ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତେବେ statement 2 होची ଆପଣଙ୍କର correct statement. 2 होची ଆପଣଙ୍କର correct statement, that is Famsana buildings tend to be broader and shorter than Latin one, and their roofs are composed of several laps and gently rise to a single point over the center of the building, unlike Latina opens and look like sharply rising tall towers. Okay, let's go to the move. With respect to the Khajuraho temple architecture, which of the following statements is correct? First, Khajuraho temple is made of red marble. Khajuraho temple were patronized by the Chandela dynasty. Lakshmana temple represents the developed style of temple architecture during the uh, Chandela dynasty. The type of the style of Lakshmana temple is Panchayatana style. ये भी किसी options दिया चारोटी क्वेश्चन चारोटी ऑप्शंस अच्छी खजुराहो टेम्पल विषय यदि आप एक्सप्लोर करने को चाहिए तेज द्वितीय तीनोटी एवं चतुर्थ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक अच्छे तेज फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कहीं ना से सैंडस्टोन रे ही तैयारी रेड स्टोन नुहे ओके चलो तो नेक्स्ट देखिबा व्हिच फेस्टिवल इन्वॉल्व्स ग्रैंड चैरियट प्रोसेशन ऑफ डेटीज जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा नो नीड टू एक्सप्लेन रथ यात्रा consider the following statements during the temple was built 13th century Narsimhadev one of Eastern Ganga dynasty. The main structure is designed in the form of chariot featuring 24 intricately carved stone wheels represents the economic cycle of the time. ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆନ୍ସର କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ. Chou festival. The festival is primarily attached to the Odissi dance form. The dance form has various classical and martial art elements. The dance is associated with the Sambalpur districts. Answer होची कौन? Answer होची 1 and 2. Just a second. Answer is 1 and 2. Chou dance in 3 district style practiced in Delhi, a contiguous tribe of Odisha. तो खास करके मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे ही ये ट्राइबल डांस या ट्राइब कम्युनिटी आपन को अधिका देखिबा को मिले. 86 को जिबा. Consider the following statements regarding the Delhi Sultanate. Musical instruments such as sarangi and rabab were introduced during this period. Amir Khusro uh, introduced many new ragas such as Gora, Sanam. The position of women improved. तो ये जो तृतीय statement टी तृतीय statement the position of women improved. This is very vague concept. Improve କିଛି ସେମିତି ହେଇ ନଥିଲା. ତେଣୁ 1 and 2 statements are correct. Which among the following were the special features of the Vijayanagar Empire? Special features of Vijayanagar Empire देखिए fortification of city, polygar system, building of Kalyan Mandap. A well-known painting Bani Thani belongs to Kishangarh school. ये जो बानी थानी मन रखिबे को स्कूल रो रिप्रेजेंट करूचे को ग्रुप रो Kishangarh school. This is something you can say essentially a synthesis of Mughal and local style. Okay, and the theme of the style is the representation of affection between Krishna and Radha. चलो तो next जीवा. Consider the following: Dadu Dayal Guru Nanak Tagraj, who among were preaching when Lodi dynasty fell, the Babar took over. तबे the answer देखिए
ତେବେ ଗୁରୁ ନାନକ ହିଁ କେବଳ ଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ଯୋଉ ଯିଏକି ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଲୋଧି ଡାଇନେଷ୍ଟି ର अंत ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବାବର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲେ ସେଟାର ସମୟ ଥିଲା 1532। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପରେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ହେଇକି ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଦାଦୁ ଦୟାଲ ତା ପରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Saint Nimbarkar was a contemporary of Akbar. Saint Kabir was greatly influenced by Sheikh Ahmad Sirindi. Which of the following statements are correct? So neither one nor two. Nimbarkar and Ballavacharya also preachers of Vaishnavite Bhakti of Telangana region. Or Akbar was 15th century, so unlikely to be contemporaries. Okay. देखो आमर प्रिलिम्स टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए, जो मैंने चाहूँगी ए वर्षर प्रिलिम्स 2023 को जॉइन करने, सो विदाउट एनी डिले आप प्रिलिम्स टेस्ट रे जॉइन करेंगे एंड हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी विथ लो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट या फी आप देखिए बहुत कम अच्छी यार, तेणु प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज तेणु जो मैंने प्रिलिम्स होनी या प्रथम थर प्रिलिम्स दौरान तेणु विदाउट एनी रिस्क आप प्रति सप्ताह गोटे लेखा टेस्ट दे पारे एवं आम तार एक्सप्लेनेशन सह तार वीडियो आपन को प्रोवाइड कर 64 जोगिनी मंदिर विषय पचरा जाइए। फर्स्ट हूँ सर्कुलर टेम्पल, ओनली सर्कुलर टेम्पल इन इंडिया, meant to promote Vaishnava cult, and it has been raised to popular belief that it was the inspiration behind Indian Parliament building. So Indian Parliament building जो goal structure अच्छी सेट हो inspired H, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट थी बात। Which of the following relief sculpture inscription is Raneo Asoka mentioned along with the stone portrait of Asoka? तेणु एटा होची कंगन हाली तेणु एटा होची स्टोन इंस्क्रिप्शन जहार ना होची रानियो अशोका। ओके, with reference to the cultural history of India, memorizing of chronicles, dynastic history, and epic tales was the profession who of the following? तेणु मगध जदि आपण देखिबे ई कामटी करूथले मेमोराइजिंग करिवार, तो से प्रैक्टिस करूथले। नेक्स्ट देखिबा को लैंग्वेज को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज दिया जाइछि, ओडिसा को दिया जाइछि, तापरे वर्तमान सुधा कोनसी लैंग्वेज को दिया जाय नहीं। द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माय सोल को फिलोसफी कोठी लिखा जाय अछि, उपनिषद रे लिखा अछि। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट जदि आपण देखिबे खरोस्ती राइट टू लेफ्ट रे लिखा जाए। The silver coins issued by the Guptas are called रूपक। रूपक होची सिल्वर कॉइन को बुझा जाए। Consider the following statements and mark the option which is correct. एटे देखिबे विक्रमादित्य 6 was the hero of बिल्हाना विक्रमकदेव चरित्र। एठी फर्स्ट स्टेटमेंट द करेक्ट अछि, बट सेकंड स्टेटमेंट जो अछि the Siddhanta ceremony was written by Lilavati. That was the wrong answer. Lilavati was composed and renowned astronomer mathematician Bhaskaracharya. Okay. Next देखिबा the first writer to use Urdu as a medium of poetic expression ताका ना होची अमीर खुसरो। Next देखिबा the famous book Harbilasam was written by Srinath. Okay. तो ये थिला टोटल हमर 100 क्वेश्चन जो मन हमर मेन स्टेज सीरीज जॉइन करबा पे चाहउछंती। हमर कोर्सेस अछि आपण देखि परिबे मेन स्टेज सीरीज मिनिमम कॉस्ट एवं जो क्यूआर अछि क्यूआर को स्कैन करके आपण तक जॉइन करि परिबे। ठीक अछि, आज पई एति कि पुणी देखा हो आउट नुवा वीडियो रे नुवा टॉपिक को नहीं। धन्यवाद।